आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अहम बात। मैं हूं यूसरा हुसैन। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। मेरे आज के गेस्ट अहम बात पे हैं डायरेक्टर निफ्ट, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के नाम से बेहतर जानते हैं, वहां के डायरेक्टर मिस्टर जावेद वानी। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया, थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आपने जून 2020 में ज्वाइन किया, तब से लेके अभी तक निफ्ट में क्या चेंजेस आपने देखे हैं? वेयर डू यू सी निफ्ट टुडे इन सालों के बाद? कितना डिफरेंस लग रहा है आपको? बिफोर आई आंसर दैट, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इदारा है, एजुकेशनल इदारा है, हायर एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंडिया पार्लियामेंट्री एक्ट है उसके अंडर ये एस्टैब्लिश हुआ है। हमारे 18 कैंपसेस हैं, बिल्कुल। एक कैंपस श्रीनगर में है। 2020 में मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के इमीडिएटली बाद मेरा इमीडिएट जो था टारगेट विद दैट वाज कि जो हमारा परमानेंट कैंपस है ओमपुरा बडगाम में, उस टाइम पे ज़ेरे तामीर था, उसको कंप्लीट करना। बिकॉज आई थिंक फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू हैव एन एड्रेस, that is something which gives and a better infrastructure. Absolutely, that's for sure. And when you have an address, you have an infrastructure which is kind of a एक सेल्फ एक अपील रहती है उसमें, देन यू आर एबल टू क्रिएट इमेज ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। तो प्रायोरिटी थी कि कैंपस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करें, वहाँ शिफ्ट हो जाए, बच्चों को जो हमने फैसिलिटीज देनी है कैंपस में वो हम उनको मैसर कर पाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें हो गई हैं। लास्ट ईयर वी शिफ्टेड टू द कैंपस एंड वी आर करंटली ऑपरेटिंग फ्रॉम जो हमारा परमानेंट कैंपस है ओमपुरा बडगाम में, वहाँ से। उसके अलावा प्रोग्राम्स उस टाइम पे 2020 में हमारे पास 2 प्रोग्राम्स थे श्रीनगर कैंपस में, अभी 5 है, 5 प्रोग्राम्स हो गए। लास्ट 3 इयर्स में वी हैव डन मेनी प्रोजेक्ट्स विच आर प्राइमरली जो हमारा क्राफ्ट का बड़ा एक यहाँ पे सेक्टर है, इंडस्ट्री है, उसको रिवाइव करना, रिलाइन करना या फिर प्रमोट करना, उसके लिए तो मुझे लगता है प्रोग्राम में उसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली, मैं आपसे जरूर इसके बारे में भी सवाल पूछूंगी, बट ये बताइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी क्या उसको मुख्तलिफ बनाता है? कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी चीजें हैं या फैक्टर्स हैं जो निफ्ट को बाकी इंस्टीट्यूशन से या बाकी कैंपसेस से, 18 कैंपस है जैसा कि आपने कहा, उनसे थोड़ा मुख्तलिफ बनाता है, डिफरेंट बनाता है, या कह सकते हैं क्योंकि हम कश्मीर से बेहतर बनाता है इफ एट ऑल? क्या हमारा जो टीचिंग मेथड है वो बाकी जो 18 कैंपसेस है, 17 कैंपसेस है, वैसा ही है, उतना ही एफिशिएंट है या उससे बेहतर है? व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस निफ्ट? पहली डिफरेंस बिटवीन निफ्ट एंड अदर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस वो ये है विच इज प्रोमिनेंट, जो प्रोफेशनल कोर्सेज जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, निफ्ट इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम वे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा जो भी क्लास में टीचिंग होता है या फिर बच्चों का इवेल्युएशन एग्जामिनेशन होता है, उसमें पेन एंड पेपर हम लोग कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। इट्स ऑल एक्सपीरियंशियल, इट्स ऑल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल। बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है, जो बच्चों का आजकल हमारे फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चों को 25 दिन पहले, 30 दिन पहले, 1 महीना पहले उनका क्वेश्चन मिल चुका है कि भाई आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, इस कंटेक्स्ट में बनाना है, आप 1 महीना लैब में बैठो, बना के दे दो। रेगुलरली टीचर मॉनिटर करता है, फीडबैक देता है एट द एंड ऑफ द 1 मंथ विच इज राइट नाउ गोइंग ऑन। ये बच्चे जो हमारे स्टूडेंट है अपने टीचर के सामने, पैनल ऑफ टीचर्स के सामने अपना जो प्रोडक्ट है, असाइनमेंट है, उसको डिफेंड करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। सो इट इज टॉट द सेम वे जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाना चाहिए, उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। और आई थिंक दिस इज द रीजन ऑल्सो कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडस्ट्री रेडी होते हैं। व्हेन दे कंप्लीट दे स्ट्रेट अवे ज्वाइन इंडस्ट्री, और उसमें उनको गैप नहीं लगती, विच इज नॉर्मली अ प्रॉब्लम विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वो इंडस्ट्री में नहीं होता है, एक गैप होती है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ जाती है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट ये नहीं है कि बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा है तब अनएम्प्लॉयड, विच इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेंज। हमारा जो कैंपस में तरीका विज अदर कैंपसेस ऑलमोस्ट सेम है। 18 के 18 कैंपसेस जो निफ्ट के हैं, एक ही करिकुलम है, एक ही स्टैंडर्डाइजेशन है और उसी तरीके से पढ़ाया जाता है। निफ्ट श्रीनगर हमारे दूसरे जो कैंपसेस हैं उनसे डिफरेंट किस लिहाज में है? आई वुड गिव क्रेडिट टू जो हमारे कश्मीर के क्राफ्ट्स यहाँ पे है, बिकॉज निफ्ट का जो करिकुलम है इट इज टेक्सटाइल एंड डिजाइन बेस्ड, तो हमारे जो लोकल यहाँ क्राफ्ट क्लस्टर्स हैं एक क्लोज राब्ता है। तो जो डाइवर्सिटी, रिचनेस, क्वालिटी या एवोल्यूशन में बताऊं कश्मीर के क्राफ्ट्स में है, वो हमारे किसी और स्टेट में नहीं है। और इससे जो यहाँ डिजाइनर जो पढ़ रहे हैं या फ्यूचर डिजाइनर्स
جو ڈیزائنرز ان شیپ ہے جو بن رہے ہیں ان کو کافی اچھا ایکسپوجر مل رہا ہے. ایک جو ہائی کوالٹی گلوبل لیول کے برانڈز ہیں کرافٹس اس میں ملتا ہے. آئی تھنک دیٹ گیوز اس اے یونیک feature to call that this is what we have specially to offer. And apart from that I would say as on date جو نفٹ سری نگر کا کیمپس ہے compared to all other 18 campuses we are best in terms of infrastructure. لولی. اچھا آپ نے کہا کہ پہلے 2 کورسز آپ آفر کرتے تھے, اب میرے خیال سے 5 ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا, تو ان کے بارے میں ہمیں بتائیے. واٹ از دا انکریز آف دا کورسز یا کیا آفر کر رہا ہے ابھی نفٹ بچوں کو؟ 16 میں اس کیمپس کی شروعات ہوئی, اکیڈمک شروعات جی 16 میں, اور ٹیمپرری کیمپس اسٹارٹ ہوا. اس ٹائم سے 2 کورسز چل رہے تھے, دونوں انڈر گریجویٹ ہے, بیچلرز. ہمارے جو بیچلرز پروگرام ہوتے ہیں ان کو ہم بیچلرز ان ڈیزائن بولتے ہیں. Bachelor's in design, then there are 2 specialization, one was in fashion communication, other fashion design. 2016 سے 20 تک یہی کورسز چلے. پھر ہم نے 22 سے لاسٹ ایئر سے we added 2 more programs. ایک اس میں ماسٹرز ان فیشن مینجمنٹ, ایک بیچلرز ان ایکسیسری ڈیزائن ہے which is again پروڈکٹ ڈیزائننگ جس کو ہم بتاتے ہیں. اور لاسٹ ایئر مطلب اس سال 2023 میں we have added 1 more bachelor's which is in textile design. تو ابھی ہمارے پاس 5 پروگرامز ہیں, 4 انڈر گریجویٹ ہے اس میں, ٹیکسٹائل ڈیزائن, فیشن کمیونیکیشن, فیشن ڈیزائن اینڈ ایکسیسری ڈیزائن, اور ایک ماسٹرز پروگرام ہے ماسٹرز ان فیشن مینجمنٹ. انشاءاللہ امید ہے اس سال جو ہمارا سیشن ہوگا جولائی اگست میں, وی آر پلاننگ ٹو ایڈ مور پروگرامز. اچھا جب نفٹ کو سیٹ اپ کیا گیا تھا, دی آبجیکٹو واز ٹو ہیو اے اسٹیمولیٹنگ, ایوالونگ اینڈ اے ریئلی ماڈرن کائنڈ آف ایجوکیشن. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ Yes, I should say spot on. We are going in the right direction. اور again as I said that جو ہمارا institutional thought process ہے یا پھر جو ہمارے اس کے ساتھ جو process involved ہے, that is clearly that جو انڈسٹری میں ٹرینڈ ہے, جو انڈسٹری میں ایوالو ہو رہے ہیں ہاٹ ایریاز, اپنی گریجویٹس کو ہم وہی تعلیم دینے. ہر 2 سال کے بعد نفٹ ریویوز اٹس کریکولم اور ریوائز کر کے ایز پر انڈسٹری ریکوائرمنٹس کر دیتا ہے. تو اس حساب سے آئی تھنک وی آر ڈوئنگ کنسیڈریبلی ویری ویل ان امپارٹنگ ریلیونٹ ایجوکیشن. اور میں اگین اسی پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بچے انڈسٹری ریڈی ہوتے ہیں, وین ایور ایز اینڈ وین دے کمپلیٹ دا گریجویشن اینڈ جوائن انڈسٹری, they are ready to take on any role. Exactly. And there is not that kind of a huge gap between what you are teaching them in the classroom. اس کا یہی ایک ریزن ہے کہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ انڈسٹری ریلیونٹ ہے, اور کافی حد تک ہم انڈسٹری کے ایکسپرٹس کو لاتے ہیں اور ان سے ہمارے جو کیمپس میں ہے وہ پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو. انڈسٹری میں بچے ہمارے ریگولرلی تھرو ڈفرینٹ مینز, انٹرنشپ, گریجویشن, پروڈکٹ جاتے رہتے ہیں اور وہاں سے بھی ایکسپوجر ملتا ہے. لولی. اچھا کیا رسپانس ہے اسٹوڈنٹس کا؟ کیونکہ کشمیر میں کیمپس ہے, یہاں کے ویدر کنڈیشنز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھنڈ بہت ہے, اور بچے جو ہے میرے خیال سے باہر سے بھی آتے ہیں, ہمارے لوکل اسٹوڈنٹس بھی ہیں. واٹ از دا اوور آل رسپانس آف دا اسٹوڈنٹس؟ آئی مسٹ سے اینڈ آئی مسٹ سے ویری ہیپی ٹو سے دیٹ اٹ ہیز بین ویری انکریجنگ, کافی اچھا ہے. انفیکٹ جب یہ کیمپس اسٹیبلش ہوا تھا تو آئی ایم شیور کہ جو اسٹیک ہولڈرز تھے, بڑا ایک کنسرن تھا کہ کیا یہاں کے بچے باہر سے جو ہے وہ باہر سے آ کے, دوسرے اسٹیٹ سے آ کے کشمیر میں ایک فیشن کالج میں ایڈمیشن لے کے بیٹھیں گے, پڑھیں گے 4 سال. تو ٹو لارجر ایکسٹینٹ آئی تھنک وی ہیو آنسرڈ دیٹ کوشچن اینڈ ان اے نائس مینر. وی ہیو ایز آف نو اسٹوڈنٹس فرام اراؤنڈ 20 states who are studying in the campus. And most of them 70% are staying within the campus. Hostel کافی اچھا ہائی کوالٹی ہاسٹل اکوموڈیشن اویلیبل ہے. ہمارے لوکل یہاں کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان کا بھی وہ بھی ایڈمیشن لے رہے ہیں سری نگر کیمپس میں. حالانکہ اس نمبر میں جو ہمارا لوکل یہاں ابھی کم ہے. Personally, I mean, say we are trying our best that. What is the quota? What is the reservation for the students of JNK? See, local students یا جو ہمارے یوتھ ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے جو جموں, سری نگر اور لداخ کے ینگ ہمارے پاپولیشن ہیں ان کے لیے 35% ریزرویشن ان ایچ پروگرام ایٹ NIFT سری نگر کیمپس. سو دیٹ از اویلیبل اینڈ دس از کنسیڈرنگ آل انڈیا لیول پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. 18 کے سارے کیمپسز ٹوگیدر ایک کامن ٹیسٹ ہوتا ہے اور آل انڈیا رینکنگ پہ پھر کیمپس اور پروگرامز الاٹ ہوتے ہیں. بٹ یہاں جو ہے جموں کشمیر اور لداخ کے جو ہمارے لوکل بچے یہاں پہ ہیں ان کے لیے 35% ریزرویشن اویلیبل ہے. اس میں وی آر ٹرائنگ ٹو سی دیٹ وی ریچ ٹو دا لوکل پاپولیشن
and try to convey that there is a design industry, textile industry, and how NIFT is doing good in fashion education if they want to join us. We're trying to bridge that gap. Bridge that gap. And what about job placements? जब बच्चे पढ़ते हैं तो job placements में आप NIFT को कहाँ देखते हैं, कितना successful देखते हैं? देखिए, this is a professional course, so we are absolutely conscious about this fact کہ اگر 4 سال کی ڈگری کسی نے کی ہے, he has to have kind of immediately a job. And institution owns this responsibility in the sense we have 2 options for placement. ایک pre placement option ہوتا ہے جو کیمپس میں ہی ہوتا ہے, ایک کیمپس پلیسمنٹ ہوتی ہے which is once you complete the graduation or post graduation. اور اس میں ایک بہت ہی اچھا اپروچ یہ ہے کہ 18 campuses pool together resources, جو جاب اوپننگز ہوتی ہے, جو کمپنیز اپروچ ہمیں کرتی ہے, 18 کے 18 کیمپسز ٹوگیدر اس پلیسمنٹس کو آگے لے کے جاتے ہیں. اس میں بیوٹی یہ ہے, اگر چنئی میں کوئی ویکنسی اویلیبل ہے, دیٹ ویکنسی از ایکولی اویلیبل ٹو ایوری اسٹوڈنٹ انکلوڈنگ دا NIFT سری نگر اسٹوڈنٹس. تو وہ ایک پروسیس ہے اراؤنڈ 1.5 month کا, 1 مہینے کا جو ہمارا چلتا ہے, جس میں بچے رجسٹر کرتے ہیں اینڈ دین دے کمپیٹ اور گو تھرو دا پروسیس فار دا پلیسمنٹس. کمپنی آتی ہے, کافی ساری آتی ہے وچ آر ٹیکسٹائل, فیشن یا پروڈکٹ ڈیزائننگ میں پلیسمنٹس میں. اور میکسیمم جو آلموسٹ بچے دے اف دے وانٹ ٹو جوائن, بیکاز ایک اچھا ٹرینڈ میں نے NIFT میں یہ بھی دیکھا کہ 4 سال کی گریجویشن کے بعد بچی کو ایک کلیئرٹی آتی ہے کہ نہیں جی میں نے خود کا اپنا ایک بزنس امیجیٹلی سیٹ اپ کرنا ہے, اینڈ دے ڈونٹ سٹ ان دا پلیسمنٹس. دیٹ ہیپنز کوائٹ آفن ان NIFT. They start but the options for people who want to join or get a job and جو نوکری کرنا چاہتے ہیں, job placement, that is absolutely there, and institution does not shy away from that responsibility. We provide them enough opportunities. اور ہمارا انسٹیٹیوشنل ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اگر جتنے بچے رجسٹر ہوتے ہیں کیمپس پلیسمنٹ کے لیے, we cover all 100%, یعنی all of them should get a job. That is what is the target of the institution. کہاں دیکھتے ہیں آپ 18 کیمپسز میں سے سری نگر کے کیمپس کو, کیا ریٹنگ دیں گے آپ, کہاں پہ آپ پلیس کریں گے سری نگر کیمپس کو؟ We are 18 campuses as I said, and اس ٹائم اسکیل میں NIFT is one of the youngest in the campuses. اور 16 میں حالانکہ ہماری شروعات ہوئی, but because we were in a temporary campus 2022 تک there was no expansion and we couldn't add up courses. اور last year سے we started kind of expanding and providing facilities. رینکنگ کے لیے کرائٹیرین ہوتا ہے دیٹ یو ہیو ٹو پٹ اپ سرٹن پیریڈز آف یور ایگزسٹنس اینڈ بیچز, دین یو کین پارٹیسپیٹ اینڈ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کافی جگہ رینکنگ ہوتی ہے. بٹ آئی کین کائنڈ آف ایک وسوخ کے ساتھ, ایک کانفیڈنس کے ساتھ آئی ووڈ سے دیٹ وی رائٹ ناؤ ود ان دا ٹاپ 10 جو NIFT کے کیمپسز ہے, وی آر دیئر. بٹ اٹ ول ناٹ بی فیئر فار می ٹو ٹیک اے کال ایگزیکٹلی ویئر اٹ از. آئی ووڈ لیو اٹ ٹو دا رینکنگ, اینڈ ان شاء اللہ اس سمر میں we are participating in the ranking, and I'm hopeful that we'll find a decent place among those top fashion schools. Considering کہ آپ you're fairly new. Absolutely. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے اس پار بات چیت جاری رہے گی. میرے ساتھ ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر مسٹر جاوید وانی آن اہم بات. ویلکم بیک. میرا اگلا سوال آپ سے, آپ کا جو فیس اسٹرکچر ہے وہ باقی انسٹیٹیوشن سے تھوڑا سا ہائر ہے, آئی مین اٹس ناٹ ہڈن, تھوڑا زیادہ ہے. اب اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مینز نہیں ہے آپ کی فیس پے کرنے کے لیے, اس کے لیے کیا اسپیشل ہے, اس کے لیے کیا کوئی پروویژن ہے؟ وی آر اے پبلک انسٹیٹیوشن اینڈ وی آر conscious of the fact that we have responsibility towards a section of the society جو afford نہیں کر پائیں گے. جی کسی کا مطلب a student who is very good in kind of creative skills اور ہماری انسٹیٹیوشن کو جوائن کرنا چاہتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ دروازے بند ہیں ان کے لیے. That is not. We have a in-house scholarship scheme جس کو ہم سارتھک کہتے ہیں. This is for NIFT students, جو بچے ہمارے ایڈمیشن جن کا ہوتا ہے تھرو اے پروسیس اینڈ بیسڈ آن دیئر اکنامک پروفائل وی پرووائڈ دیم اسکالرشپس. اور اس میں اٹ از اے فی ویویئر, جو ٹیوشن فی ان کو دینا پڑتا ہے, وچ از فرام 50% to 100% ڈپینڈنگ آن دا سیویئرٹی آف دا کیس. جسٹ فار این ایگزامپل, جو ہم نے اس سال ہم نے اسکالرشپس دی وچ واز اراؤنڈ 20 lakhs فار دس ایئر اونلی, اور یہ ایئرلی بیسس پہ چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف انڈیا کے کافی سارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اسکالرشپس پرووائڈ کرتے ہیں,
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है NSP का, वहाँ देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मिलती हैं जी, वो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं. आई वुड सजेस्ट दैट दे कैन अवेल बोथ इन हाउस एज वेल एज जो NSP है, वहाँ से स्कॉलरशिप मिल जाएगी. इफ दे रियली डिजर्व इट, आई एम श्योर दे विल गेट इट. दे विल गेट इट. अच्छा, हमने बात करी जहाँ का जो लोकल जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, बहुत रिच है, ग्लोबल लेवल पे पहुंच चुका है. निफ्ट के बच्चे या निफ्ट एज एन इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है इस लोकल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए? निफ्ट हैज अ बिल्ट इन स्कीम जिसको हम क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव कहते हैं, जिसमें जब बच्चे एडमिशन लेता है डिजाइनिंग के कोर्स में, जो कि 4 साल का कोर्स है, वो एक पर्टिकुलर क्लस्टर के साथ अटैच होता है, क्राफ्ट क्लस्टर. मान लीजिए हमारे कारपेट्स बांडीपुरा साइड में काफी अच्छे बनते हैं, तो वी अटैच अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स विद द क्राफ्ट क्लस्टर कारपेट्स. ऐसे ही अगर पेपर माशी का हमारे डाउनटाउन में काफी सारे क्लस्टर्स हैं जहाँ पे पेपर माशी बनते हैं, दे गेट अटैच्ड. तो फर्स्ट फेज इज दे अंडरस्टैंड द क्राफ्ट. Second is they sit with the artisan and give him design inputs. Okay. Third is they come up with the products which are new, which are innovative. ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए. एक स्टूडेंट जो डिजाइन एज अ करियर पढ़ रहा है और वो क्राफ्ट को समझ रहा है और उसकी इंट्रिकेसीज, उसके जो फाइन लेयर्स है उसको समझ रहा है, विच हेल्प देम हिम इन काइंड ऑफ अ ग्रोइंग एज अ डिजाइनर. आर्टिजन को एक डिजाइनर इनपुट मिलते हैं, एक मार्केट का इनपुट मिलता है, एंड जो लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज होती हैं प्रोडक्ट कम्युनिकेशन की, वो सीखने को मिलती है. तो उस लिहाज से क्लोज एक कनेक्शन होता है which is there between the students and these artisans and clusters, and this is, as I said, win-win for both of them. For both of them. Is NIFT basically into skill training? जो हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, we do have upskilling programs and these are sponsored programs जहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है, वहीं से हमें अप्रोच करते हैं that look we think that, जैसे फॉर एग्जांपल बुटीक जो हमारे यहाँ पे काफी सारे आउटलेट्स हैं, वर्कर्स हैं, दे डू नॉट हैव दैट लेटेस्ट पल्स ऑफ द फैशन एंड ट्रेंड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड हाउ कैन यू हेल्प अस. सो उस डायरेक्शन में वी डू कंडक्ट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, 1 महीना 15 दिन डिपेंडिंग कि किस निश एरिया में हमने वो करना है. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ J&K अप्रोचेड अस, 1 महीने का हमने बैकवर्ड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम के 2 ब्लॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, पखरपुरा और सुरसिया. वहाँ से 50 आर्टिजन्स हमने लाए, डेली बेसिस पे सुबह शाम वो कैंपस आते थे और वहाँ 1 महीने का प्रोग्राम चला. दीज वर पीपल मोस्टली वुमेन हु आर इनटू कटिंग टेलरिंग. हमारा ऑब्जेक्टिव था उनको थोड़ा डिजाइन एलिमेंट्स हम सिखाएं, थोड़ा बहुत उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप ट्रेंड्स, पैटर्न्स, कलर्स कैसे पिकअप करोगे और कैसे उनको प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करोगे, जो हमारे ऑब्वियसली कश्मीर के प्रोडक्ट्स हैं, जो अपैरल प्रोडक्शन में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए. तो दीज काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डज हैपन रेगुलरली एट द कैंपस. तो मतलब आप स्किल बिल्डिंग, स्किल ट्रेनिंग में भी आप ऐसा करें. अच्छा, कैंपस के बारे में थोड़ा बताया. आपने अभी मेंशन किया इससे पहले कि बड़ा अच्छा हॉस्टल है आपका, तो थोड़े कैंपस टेक अस थ्रू your campus. Visually, if I can say visualize, I would say that is one of the best, as I said in the beginning. We have almost everything which a student needs in the campus. We are trying to see that they have good sports fields हमारे हैं which are enabled, hostel facility, we have a good canteen, cafeteria. बच्चों को काफ़ी सारी स्टेशनरी हमारे जो कोर्सेज हैं उनको कंप्लीट करने में चाहिए. We have within a stationery shop, एक departmental store, बैंकिंग फैसिलिटी विद इन द कैंपस. देन ऑफ कोर्स एक अच्छा लैंडस्केप है, अच्छा आर्किटेक्चर है जो एस्थेटिकली काफी अपीलिंग लगता है. लोकेशन भी कैंपस की बहुत अच्छी है. इनफैक्ट रिसेंटली वी हैव कम अप विद अ वर्चुअल टूर, कंसीडरिंग दैट एवरीबडी विल नॉट बी एबल टू विजिट आवर कैंपस. सो दैट वर्चुअल टूर इज ऑन द वेबसाइट ऑफ निफ्ट श्रीनगर. एनीबडी वुड लाइक टू हैव अ व्यू, काफी अच्छा डिटेलिंग में वो है, तो दे कैन डू. एंड काफ़ी एस्थेटिक और लगता है कि मतलब अगर आप 4 साल एक इंस्टीट्यूशन में गुजार रहे हो तो वी अंडरस्टैंड दैट एक इमोशनल बॉन्ड बनता है. वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट, वी क्रिएट एवरी फीचर, एवरी फैसिलिटी विद इन द कैंपस दैट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज समथिंग वी वुड लव टू हैव, दैट बॉन्डिंग विद these students, not only when they are in the campus, when they are good, doing good in the industry, would like to have that bond going on.
How beautiful. अगर सारे एजुकेशनिस्ट और सारे इंस्टीट्यूशंस इस तरह से सोचने लग जाएं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का कंफर्ट जो होगा बोथ इन टर्म्स ऑफ मेंटल, उनका मेंटल हेल्थ को लेके या उनका फिजिकल कंफर्ट, आई थिंक ऑल ऑफ दैट शुड बी कंसिडर्ड एंड पुट इट ब्यूटिफुली. अच्छा, ये तो कैंपस के बारे में हम बात कर रहे थे, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपके ओपिनियन में आपको लगता है दैट हम सही डायरेक्शन में हमारी जो टीचिंग है या हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, यू नो इट्स अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड और हर वक्त हर पल हर पहर दुनिया जो है वो बदल रही है, इवॉल्व हो रही है, तो लगता है आपको हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज बाकी स्टेट्स या बाकी मुल्कों से कम्पीट करने लायक बन रही है? Bit kind of a tough question, but yes, certain factors are there, and I'm say these are factors. I think everyone who is there as a stakeholder in higher education, I think the first thing is yes, let us accept the facts. Unemployment is there, and the concern is जो लोगों ने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो अगर एम्प्लॉयबल नहीं है, देयर इज अ काइंड ऑफ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अगर 3 साल 5 साल किसी स्टूडेंट ने पढ़े हैं, कोई एक डिग्री पढ़ी है, कुछ स्किल के 4 साल 5 साल उसके लिए दिए, और अगर वो स्किल वो उसने पूरा कैप्चर नहीं किया है तो उसका उसी का फॉल्ट नहीं इट्स नॉट. इफ ही हैज पास्ड ग्रेजुएशन, उसने की है, पोस्ट ग्रेजुएशन 60% 70% मार्क्स, उसके बाद वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट या अच्छी एक जॉब उसको नहीं मिल रही है, तो दैट रेजेस अ क्वेश्चन मार्क. सो ऑफ कोर्स देयर आर इश्यूज, एंड एज आई सेड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है. देयर आर गैप्स मैं मोस्टली ये बताऊं कि आई थिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, वी नीड टू टेक अ पॉज एंड अ रिव्यू कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हम गलत चीज़ें पढ़ा रहे हैं, हमारा करिकुलम अपडेटेड नहीं है एज पर द जो करंट सिनेरियो है किसी भी सब्जेक्ट का. क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारा तरीक़ेकार जो है पढ़ाने का गलत है, हम अच्छी से वो चीज़ें पढ़ा नहीं सकते. एग्जाम्पल प्रोफेशनल कोर्सेज, माई बिलीव एंड इनफैक्ट जो एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैव टू बी हैंड्स ऑन, they have to be experiential, they have to be practical, then only कोई बच्चा उसको अच्छे से इस स्किल को पिकअप करे. आई थिंक these are some of the glaring questions, and मैं ये अपने आप से भी पहले पूछता हूँ, और this is something कि कहीं ना कहीं गैप तो है, और ये गैप जैसे मैंने कहा या तो गलत चीज़ पढ़ा रहे हैं, गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं. ऑफ लेट काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं, एक कंपटीशन बढ़ रहा है बिटवीन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बिटवीन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है. देयर आर रिफॉर्म्स हैपनिंग. आई थिंक थिंग्स आर मूविंग ऑन इन द राइट डायरेक्शन, बट वी नीड टू स्टिल डू अ लॉट इन गेटिंग देयर. जैसे आपने कहा कि जो लीडिंग या फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, यूके, यूएस, उनका स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, there is still a gap and we need to walk that gap. Absolutely true. It would be my last question, but it is not related to the campus or NIFT, but मैं आपसे generally पूछना चाहूँगी, आपको लगता है कि chat GPT, artificial intelligence जैसे tools हैं, chat GPT etc., वो एक teacher को classroom में replace कर सकते हैं? Is it already happening or do we expect this to happen? जब टाइपराइटर आया था तो उस टाइम पे ये कहा गया कि ऑफिस में जो भी जॉब कर रहा है तो वो सारे लोग अब बाहर जाएंगे, बिकॉज वी वुड नॉट नीड दैट मेनी पीपल इन द ऑफिस, एंड दैट डिडंट हैपन. ऑफ कोर्स टाइपराइटर ही रिप्लेस हो गया विद द कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट. सो एक्चुअली ये जो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस होते हैं, दे हैव बीन हैपनिंग राइट फ्रॉम द सेंचुरीज, डिफरेंट मैनर्स एंड डिफरेंट शेप्स. Jobs would not go away. Certain class of jobs and type of jobs would go away. जो human being है या फिर इंसान, हमने we have to adjust and we have to kind of change the job role profile. अगर chat GPT है, I'm sure it will not replace the teacher. The only thing is a teacher who knows how to use chat GPT in his teaching, he would survive. Rather than a teacher who would say कि नहीं सी इधर वो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो चेंज के साथ खुद को चेंज नहीं कर पाएगा, he will go away. So teachers of course will stay there, and those will stay who know how to use this chat GPT. So it is not possible entirely that technology will take away teachers from the university and colleges, but yes, these are disruptions happening.
shifts तो होते रहेंगे. बिल्कुल. Trick lies that we have to be a step Evolve. ahead of the technology. And also evolve Yes, ourselves. and it applies to every profession, including teaching. आप एक कदम इनसे आगे हैं टेक्नोलॉजी से, you will not survive, you will thrive. आप प्रमोट होंगे. But if you are behind, then of course there are chances that you will be asked to replaced. Yes. Thank you so much. But before we wrap up, एक मैं जो अभी बच्चे आपको देख रहे हैं जिनका क्रिएटिव फील्ड की तरफ ज्यादा थोड़ा सा वो है, झुकाव है, और जो जिनमें क्रिएटिविटी ज्यादा है, या स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड जो अभी ये भी देख रहे होंगे कि हम उन्हें कौन सा करियर पाथ चुनना है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? You rightly said, people who have a creative bent of mind और skills हैं या फिर इसकी तरफ थोड़ा रुझान है, I would tell them clearly that please look beyond जो हमारे ट्रेडिशनल यहाँ पे करियर पाथवेज हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड अदर थिंग्स. देयर आर थिंग्स इन डिज़ाइन, इन टेक्नोलॉजी, इन फैशन, इन टेक्सटाइल, काफ़ी सारे जॉब रोल्स हैं. दे वुड एंजॉय देयर लाइफ इफ दे आर रियली इंटरेस्टेड इन. हार्ड वर्क यहाँ भी करनी है, विदाउट हार्ड वर्क तो नहीं मिलेगा. बट इफ दे हैव दोज बेसिक स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, they should consider joining design industry, textile industry. There are varied roles. And if they have that kind of a mindset or is taraf aana chahiye, I would recommend without any hesitation that NIFT is considered globally one of the leading fashion schools. India mein one of the top most. Please join us. Thank you so much for joining us on the show. आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा. Thank you. बहुत शुक्रिया. आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल. मैं हूँ यूसरा हुसैन. अगले हफ्ते अहम बात में फिर मुलाकात होगी. स्टे ट्यून्ड.